નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? સૌપ્રથમ અહીંયા જે સ્ક્રીન પર તમને વિડીયો દેખાય તે પહેલાં નિહાળો, પછી આપણે આપણા મુદ્દા તરફ જઈએ. ઓકે, આપણે જે તમને અહીંયા હું સ્ક્રીન પર જે તમને વિડીયો દેખાડું, ફોટોગ્રાફ દેખાડું છું તે સૌપ્રથમ જુઓ, પછી તમે તેને નિહાળો, તેને દર્શન કરો, તેમાં જુઓ કે તમને શું દેખાય છે. પછી આપણે હિન્દીમાં એક મસ્ત મજાનો મુદ્દો કે જે તમને સૌને ગમે છે, તમને અહીંથી જવું ગામડે તો બહુ ગમતું હશે, તો તે મુદ્દા વિશે આપણે અનુલેખન કરવાનું થશે. ઓકે, તો સૌપ્રથમ આ વિડીયો નિહાળો. હોય બળદિયાના જોટા હોય, પડકારા હા કોટા હોય, માણસ મનમાં મોટા હોય, માથે દેશી નળિયા હોય, વીઘા એકના ફળિયા હોય, બધા હૈયા બળિયા હોય, કાયમ મોજે દરિયા હોય, સામૈયા ફૂલેકા હોય, તાલ એવા ઠેકા હોય, મોભને ભલે ટેકા હોય, દિલના ડેકા ડેકા હોય, ગાય ગોબરને ગારો હોય, આંગણ તુલસી ક્યારો હોય, ધર્મના કાંટે ધારો હોય, સૌનો વ્યવહાર સારો હોય, ભાંભરડા ભણકારા હોય, ડણકુને ડચકારા હોય, ખોખારા ખમકારા હોય, ગામડામાં વસ્તી નાની હોય, ઘરે ઘરે જ્ઞાની હોય, આંગણીએ આવકારો હોય, મહેમાનોનો મારો હોય, ચા પાવાનો ધારો હોય, વ્યવહાર એનો સારો હોય, રામ રામનો રણકારો હોય, જમાડવાનો પડકારો હોય, સત્સંગ મંડળી જામી હોય, બેસો તો સવાર સામી હોય, જ્ઞાનની વાતો બહુ નામી હોય, જાણે સ્વર્ગની ખામી હોય, વહુને સાસુ ગમતા હોય, ભેળા બેસી જમતા હોય, બોલવામાં સૌને હાય, ગુડ મોર્નિંગ, હાવ આર યુ ફ્રેન્ડ્સ? આઈ હોપ યુ ઓલ આર ફાઇન. તો આજે આપણે ધોરણ 6માં ગયા લેક્ચરમાં આપણે 1 અને 2 જે પાઠ છે તે જોઈ ગયા, એટલે કે ધોરણ 6માં પાઠ 1 અને પાઠ 2 આપણે ભણી ગયા. હવે આપણે જોવાનું છે કે વ્યાકરણના ટોપિક પણ આપણે ભણી ગયા, સંજ્ઞાના પ્રકારો, વિરામચિહ્નો, એવા બધા ટોપિકો આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. તો હિન્દીમાં ધોરણ 6માં આપણે અનુલેખન લખવાનું છે. અનુલેખન એટલે અહીંયા જે સ્ક્રીન પર તમને મળે છે તેનું બેઠું તમારી બુકમાં સારા અક્ષરે લખવાનું થશે. ઓકે, કેવા અક્ષરે? સારા અક્ષરે લખવાનું છે, એને કહેવાય અનુલેખન. તો આપણા અભ્યાસક્રમમાં એક અનુલેખનનો પાઠ પણ છે, જેમાં મેરા ગાँव ऐसी कृति बनाई हुई होगी. तो मैं आपको ये होमवर्क में भी दूंगा और आपको जो आपकी जो फेयर बुक बनाई है, पाकी बुक જેને તમે કહો છો, તો તેમાં તમારે મેરા ગાँव અનુલેખન લખવાનું છે, જે આપણી સ્ક્રીન પર આ રહ્યું, જેને હું તમને હોમવર્કમાં પણ આ ફોટોગ્રાફ સેન્ડ કરીશ. ઓકે, તો એમાંથી જોઈને તમારે સારા અક્ષરે બુકમાં લખવાનું છે. સૌપ્રથમ આપણે આને સમજતા જઈએ. તો જોઈએ સ્ક્રીન પર મેરા ગાँव. અહીંયા સ્ક્રીન પર તમને જે ફોટોગ્રાફ હું આપું છું તે પહેલાં જુઓ. ગામમાં શું શું હોય, એટલે કે મારા ગામનું વર્ણન કરવું છે તો મારા ગામમાં શું હોય તો તે આ ફોટોગ્રાફ ઉપરથી તમને દેખાશે. એવું લાગે તો આપણે એક વિડીયો મૂકીએ આગળ કે મારા ગામમાં શું હોય, અથવા તો મારા ગામની મારે કહાની કેવી હોય, અથવા તો નિબંધ લખવો હોય તેના ઉપર, તો શું લખાય? तो मेरे गाँव में सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़े जो पॉइंट्स है, मुद्दे हैं, वो दूंगा. पहला है गाँव का परिचय, दूसरा गाँव का वर्णन, तीसरा गाँव के लोग और एक आदर्श गाँव. ओके, अब हम हमारा जो अनुलेखन है वो प्रारंभ करते हैं. सबसे पहले मैं मेरा गाँव पवित्र गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है. તો આ તો અનુલેખન છે, એટલે તમે તમારી રીતે તમારા ગામનું નામ, તમારા ગામની આજુબાજુ આવતી નદીનું નામ તમે લખી શકો. માનો કે તમારા ગામનું નામ હોય सूरत, तो તમે એમ કહો मेरा गाँव पवित्र तापी नदी के तट पर बसा हुआ है, मेरे गाँव के चारों ओर रमणीय पहाड़ियाँ है, मेरे गाँव का नाम सूरत है. આવી રીતે તમે લખી શકો. પણ અત્યારે હું તમને અહીંયા જે આપેલું છે તે પ્રમાણે बोलूँ छूँ. मेरा गाँव पवित्र गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, मेरे गाँव के चारों ओर रमणीय पहाड़ियाँ है, मेरे गाँव का नाम रामपुर
दूर है। आज़ादी के बाद मेरे गांव ने बहुत तरक्की की है। गांव के दक्षिणी हिस्से में पंचायत घर है। पंचायत घर में કે જે પંચાયતી લોકો હોય, 5 વ્યક્તિઓનો સમૂહ હોય તે આખા ગામનો વહીવટ કરતા હોય તેને પંચાયતી घर કહે છે। पंचायत घर के पास ही गांव का पुस्तकालय और वाचनालय है। गांव के सारे लोग कहाँ आते हैं? वाचनालय पुस्तकालय में आते हैं। मेरे गांव में एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध राम मंदिर है। तो सबके गांव में तो राम मंदिर होगा ही। सुबह शाम आरती के समय मंदिर में बहुत भीड़ होती है। रामनवमी के अवसर पर मंदिर के पास भारी मेला लगता है। रामनवमी जब होती है तब मंदिर के आजू बाजू भारी मेला लगता है। मेरे गांव में लगभग 2000 लोगों की आबादी है। आबादी मीन्स के लोगों की संख्या। इनमें ज़्यादातर लोग किसान हैं। इनके अलावा गांव में लुहार, कुंभार, बढ़ई, दर्जी, धोबी, नाई आदि भी रहते हैं। नाई का मतलब होता है जिन्हें अपने बाबर कहिए, वाणंद कहिए। गांव के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती होते हैं। वे आज भी पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, फिर भी उनके विचार प्रगतिशील है। उनके विचार कैसे है? प्रगतिशील है। रामपुर गांव में एक प्राथमिक शाला है। हमारे गांव में एक सरकारी प्राथमिक शाला होती है, वैसे ही रामपुर गांव में एक प्राथमिक शाला है। आपके गांव का नाम आप लिखेंगे यहाँ पर तो आप भी लिख सकते हैं मेरे गांव में एक प्राथमिक शाला है। गांव में एक छोटा सा अस्पताल है। गांव में कैसा अस्पताल है? एक छोटा सा अस्पताल है। वहाँ गांव के मरीजों और मरीजों का बहुत कम पैसों में इलाज किया जाता है। गांव के जो मरीज है उसका बहुत कम पैसे में इलाज किया जाता है। गांव में 4-5 दुकानें हैं। गांव में कितनी दुकानें हैं? 4 से 5। हर रविवार को गांव में बड़ा बाजार लगता है। गांव में पशुओं की संख्या भी अच्छी है। कुछ सब्जियां तथा दूध सहकारी समिति द्वारा शहरों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। कारगिल के युद्ध में गांव का एक जवान शहीद हो गया था। इससे मेरे गांव का गौरव बढ़ गया। सचमुच रामपुर एक आदर्श गांव है। तो हमने यहाँ पढ़ा हुआ देख लिया। अब हम हमारे गांव के बारे में बात करते हैं कि गांव में कोई अच्छा व्यक्ति हो जो अच्छे काम कर रहा हो, अच्छा कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, नर्मदा का पानी अच्छा कोई सरपंच काम कर रहा हो, और गटर व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और कई सारी पुस्तकालय होगा, वाचनालय होगा, तो वो सब हमें इसमें लिखना है। आपको सिर्फ अनुलेखन करना है। अनुलेखन का मतलब है आपको ऐसे ही अपनी बुक में अच्छे अक्षर में लिखना है। समझ गए आप? तो ये मेरा गाँव आप अच्छे अक्षर से अपने पुस्तक में लिखेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो मैं ये होमवर्क में भी आपको भेज दूंगा ये फोटोग्राफ, और एक आप ये फोटोग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं। पहले आपको गांव का नाम लिखना है, फिर गांव का परिचय में मतलब कि मुद्दे लिखने हैं, गांव का वर्णन, गांव के लोग, एक आदर्श गांव ऐसा लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो हिंदी की बुक आपने बनाई है ना, जो हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, उसी बुक में आपको लिखना है। कोई दूसरी बुक बनानी नहीं है। एक बुक में 2 पार्ट बना देने हैं कि एक व्याकरण का और एक स्वाध्याय का। समझ गए? आधी बुक हो तो आधी बुक में व्याकरण लिखेंगे और आधी बुक में स्वाध्याय, ऐसा पार्ट बना देना है। तो एक बुक में सब कुछ आ जाएगा। स्वाध्याय के साथ वर्कशीट का भी मुद्दा रख देना कि जो आपको वर्कशीट दी जाएगी वो उसमें लिख देनी है। समझ गए आप? तो आज हम यहाँ तक रखते हैं।